Yes, sir. So we have discussed this thing from actually the day one, that control system analysis and design actually focuses on three main aspects. One is the transient response, the second one is stability, and the third one is steady state errors. All right. So our maybe third I would say chapter was on the transient response, where we discussed actually how we can maybe design a controller, or how we can design various parameters of a control system which will lead to a particular or a desired transient response, which includes for first order systems like time constant, and for second order systems it includes the overshoot, the rise time, the settling time, and various other factors. Okay. So that was transient response, and we could see that we can change the gain k, whereby we can actually modify the overshoot and the other parameters of the transient response. Okay. Second thing that we discussed just before the exams was about stability, where we understood the definition of stability. We have two definitions. One is BIBO definition, bounded input, bounded output definition of stability. Another was the stability definition based on the natural response, where we say that the natural response decays to zero if the system is stable, and it grows unbound if the system is unstable. And we saw the procedures to determine the stability of the system, which was using the Routh's criterion, where we saw this was one of the ways to determine the stability, though we can mathematically do it based on the differential equation also. But Routh's criterion provides us an easy way to determine the stability of the system or a given control system by just algebraic manipulation, putting up in a table and finding its stability characteristics. It doesn't tell us where the poles are, or really the nature of the actual location of the poles, but it actually tells us the placement of the poles, whether they are on the left half plane or on the right half of the g omega axis. And we have seen that if the poles are on the left hand side of the complex plane or the S plane, then the system is stable. If any of the poles, if even one pole is on the right hand side, then the system is unstable. And if the poles are on the g omega axis, the system is marginally stable. So that's what we could see, and we could see some examples also where we saw that using a gain k, let's say a variable gain, we could determine the values of k for which the system is stable and above which the system is unstable. So that was regarding transient response and the stability. Now, the third important part of this control system analysis and design is actually the steady state errors. So if we see by definition, the steady state error, it means steady state. So steady state means towards a lot of time has actually gone, that the system has been started, that actually determines, or that's what defines the steady state, when it's more steady rather than being transient in the initial phase. So it's almost towards a phase in which the system is already subjected to some inputs, and then we are actually looking at some futuristic or something like after some time what's happening to the system. So let's assume that transient response has died down. Now the system is getting more stable in a sense. What are the errors now at that point? So error is, as we have seen from the control system block diagram, error is nothing but defined between defined between the difference between the input or the desired input and the output. That's what an error actually is defined. So we will have the same definition for the error. So it's like the difference between the input and output for a prescribed, can say, test signal or input as t approaches infinity. So this is the very simple definition of the steady state error. So error is at any time the difference between the input and output. That's an error. But steady state error, when we say, it is the difference between the same input and output for a prescribed input, or you can say test signal, as t approaches infinity. So here this is what actually defines the steady state, that the time approaches infinity. So infinity doesn't mean that it is a very huge value. It means something like where the system actually goes to a stable region, so, or where the transient response actually dies down, we can consider it to be kind of an infinity as a definition.
Now, very important fact, point in this is actually the test signal or the input. So steady state errors are also not just defined, because this is a way you can actually find out the nature of the system, or you can say how it responds, what is its features, like how much error will it lead to. So it's not that we can subject it to a random signal and try to find out its stability. It will be always that while determining these, let's say steady state as a feature of the control system, we will use some test signals, or we will use some basic signals or standard signals, in which the first basic signal that we have always used is the step input. So this is the signal that we have always used to determine the stability of the systems. This is very commonly used and one of the most standard signals that we use in the control system analysis and design. So this is known as the step input. So where let's say RT यहाँ पर कोई signal दी है, suppose output भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या input भी हो सकता है, and T is the time. So on time axis we see that there is no change in the value of RT. So no input doesn't change. So it is after T is equal to 0, it has just gone to some value 1 or some value, constant value. So that's what we call as step input. So it's like it could be a step gain, step change, or something like that in the input, a sharp change. Then physical interpretation is actually it's a constant position input, and in time domain we don't have anything varying with time, so it's not a function of time. It will be just constant. You can say just 1. All right, and obviously we have seen the Laplace transform of this would be 1 by s. So we have seen this thing before also, that if you want to see the Laplace transform of the step input, it would be 1 by s, and in time domain it would be 1. So this is one of the test signals where we will see the steady state error being defined with respect to this type of signal. Another signal that we generally use is the ramp signal. So ramp signal is actually defined as a signal which varies with time in a linear function, as a linear function. So the time function would be t, so which means rt is actually equal to t, or rt could be equal to something like c of t, where c could define the slope. So this ramp can have any slope. It can have a slope which is of some, let's say, different values, isn't it? So t defines that it varies linearly with time, and its Laplace transform would be 1 by s square. So this is typical physical interpretation of this is the constant velocity. So we are seeing an increasing trend in RT. Why doesn't it seem to be a velocity? But because RT is the position, so if the velocity is constant, so the position will always keep on increasing, isn't it? So अगर ये constant velocity है और इसका function है time domain में t है, तो इसका obviously position जो है वो it will always keep on increasing because we are constantly moving. ठीक है? Similarly, we have the third one, which is the parabolic input signal, which is in the form of t square. So it's nothing but the integration of t is t square by 2. So can keep it that way, but in the time domain it will be just it's a function of t square rather than, let's say, t or maybe other values. So physical interpretation is that it's a trajectory or it's a movement in which we have a constant acceleration. ठीक है, because अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो t आ जाएगा, which means in this case the velocity is increasing. ठीक है, or sorry, the velocity is in this case what will be the velocity? आप में से कोई बताओ? वेलोसिटी चेंज करेगी. हाँ, पहले केस में बताओ क्या होगा कांस्टेंट पोजीशन में? डिस्प्लेसमेंट सर होगी सर. वेलोसिटी जहाँ डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगी वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगी. नहीं, पहले वाले में बताओ, अगर स्टेप इनपुट में कांस्टेंट वेलोसिटी 0, velocity will be 0, acceleration 0, वो भी 0 होगी. ठीक है. और सेकंड केस में acceleration 0, velocity constant. पोजीशन चेंज होगी. position will be changing, acceleration will be 0. We have a constant velocity. Constant velocity means d by dt of v, which is constant, will be equal to 0. What about constant acceleration? Velocity changing velocity and changing acceleration. हाँ, लेकिन velocity कैसे acceleration, जैसे सेकंड केस में आपको पता है कांस्टेंट वेलोसिटी है तो पोजीशन लीनियरली इंक्रीज होगी, है ना, जो मैंने लेफ्ट साइड में दिखाया है.
ठीक है, इस केस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, पोजीशन चेंज हो रही है ऐसे, विच इज एक्चुअली दिस फंक्शन टी स्क्वायर बाय 2, ये टी स्क्वायर का फंक्शन है ना, ये तो कहते हैं ना, दिस इज लाइक, ये कौन सा फंक्शन है, पैराबोला। तो उसका ये इक्वेशन है ना, तो ये Coordinate. इक्वेशन एक्चुअली यहाँ पर है, ये एक्चुअली पोजीशन की इक्वेशन है, लेकिन हम इसको कहते हैं कांस्टेंट ट्रैजेक्टरी, क्योंकि अगर इसका हम निकालेंगे डिफरेंशियल तो वो आ जाएगा वो आएगा इन द फॉर्म ऑफ टी, व्हिच मींस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगी सर। डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है ऐसे टी स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, हाँ, और इसकी वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, Time linearly. लीनियरली लीनियरली। ऐसे, ठीक है, इसकी वेलोसिटी का अगर हम ग्राफ बनाएंगे वो आएगा डिफरेंट लीनियर। dt ऑफ दिस, d by dt ऑफ दिस विल बी t, Yes, और sir. इसका 2t आ जाएगा और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, t आ जाएगा, सो द डिफरेंस, Straight line. ठीक है, इसका डिफरेंशियल होगा t, सो व्हिच विल बी अ रैंप, सो वेलोसिटी विल बी इन द फॉर्म ऑफ रैंप, कांस्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, लेकिन उसका डिफरेंशियल निकालेंगे d by dt ऑफ t which will be 1, सिट अप, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, सर ठीक है, तो इसका मतलब पैराबोलिक जो इनपुट है उसकी वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज करती है, उसके एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है, इसीलिए हमने इसको कहा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट पोजीशन। ये तीनों अलग अलग मतलब प्लॉट्स हैं और तीनों अलग अलग टेस्ट सिग्नल्स हैं। इसका मतलब है कि कोई भी सिस्टम जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि उसका इनपुट ऐसा हो स्टेप इनपुट, उसका इनपुट अलग से रैंप इनपुट हो सकता है, उसका इनपुट पैराबोलिक इनपुट हो सकता है। तो उसको हम समझने के लिए फिजिकली कहते हैं कि एक कांस्टेंट पोजीशन इनपुट है, कांस्टेंट वेलोसिटी है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। अगर आप इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वन ऑफ द एग्जांपल्स दैट इज गिवन इन द बुक इज एक्चुअली दिस वन, which is if you say case 1 of a tracking system, so there is an let's say satellite on the earth, ठीक है, or you can say an antenna on the earth which is actually tracking the satellite, ठीक है। So we have three things, one is a satellite, another is a satellite, and third is a rocket, clear? So in case 1, let's say this satellite is in the geostationary orbit, where we say that with respect to earth, let's say this is stationary and maybe it changes position, but the position changes just in the form of a step, that it changed position, it was here, it may change somewhere here, that's it. But let's say this is here only, and with respect to earth, so earth has the satellite here has to track this position, which is a kind of a static with respect to earth, so this is known as geostationary orbit. So in that case this will be that the satellite, this I would say antenna has to track the position of this satellite here, okay. So for that thing it will be a step input to this control system that is employed for the antenna tracking system. There could be a case where we have a satellite, but it is actually it is moving with constant velocity in sky, which is being tracked by again a position control system. So in this case the input to this will be a constantly moving system. So this is already moving, so this has to track this thing and it has to actually track its velocity, okay. It's a constant velocity target for this let's say satellite. And then we have a rocket, which is generally, or we can say a missile, this is known as we can call it as a an accelerating target, because it generally accelerates rather than actually moves with a constant velocity. So if this antenna has to track this, so then for the antenna this thing is a constantly, or can say constantly accelerating target, okay. So for this is a constant acceleration target, this is a constant velocity target, this is a constant position target. So for this we have to design a control system, because these will be something, this is in space, this is in space, this is in space. Let's say this is one of the examples of, let's say, space let's say applications. But in this case, if we have to track this one, which is a constant velocity, constant positions, input, then for this thing the tracking system, the control system has to be designed where we have a constant position input. And if we have to design a control system for this one, which is a constantly moving target, then for this thing the control system to be designed is an input with a moving you can say a linearly increasing or a ramp input, because that is a constant velocity input. And if we have to design a control system to track the missile, then we will have to design
can say a constantly accelerating target, ठीक है, which will be the parabolic input. जैसे यहाँ पे, so this will be the first one, the satellite which is stationary with respect to the antenna. This is a satellite which is moving with constant velocity, ठीक है, with respect to that antenna. So we have to devise this thing as the input. So we have a constant velocity input to this, and in this case we have a constantly accelerating, which is the missile or a rocket, let's say. So the control system has to be designed where the input is the constant acceleration. All these three are some of the standard ways of doing it. So these are even listed in your books also. If you want, we can note this down. So I've just written these things similar to what I have just described. So the first one is the ability to position itself with a stationary target, satellite in a geostationary orbit. So this is an example, but there could be other examples in robotics. There could be examples in machines, or you can see other systems that we see around us. All these mechatronic applications where we have these as the inputs can have constant position input, constant velocity input, and constant acceleration input. मैं आपको 1-2 मिनट देता हूँ इसको देखने के लिए. अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछिए आप. Then I can move forward. जी तुफैल साहब. यस सर, ठीक है. और आप में से कोई उमर? नो सर, सर आया समझ. शेख उमर. और दूसरा उमर क्या है? यार सर मुझे एक जगह सर आपने बताया ना कि सपोज हमारे पास वेव फॉर्म होगी स्टेप इनपुट, तो उसके लिए हमारी कांस्टेंट. सर अब अगर हमारे पास कोई अलग वेव फॉर्म होगी, मतलब नीदर दैट्स पैराबोला, या तो वो रैम भी नहीं होगी और वो स्टेप भी नहीं होगी. सपोज जो हमारा आउटपुट ही है वो कुछ और फंक्शन आएगी सर, तो हम उसको कैसे फिर इंटरप्रेट कर सकते हैं? मतलब तो क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, तो अगर हमारे पास वैसी कोई सिचुएशन आएगी जहां पे हमारी जो बॉडी है वो कांस्टेंट हम सर एक्सेलरेट नहीं हो रही होगी, सपोज वो डिसेलरेट हो रही होगी, सर फिर वहां पे हम क्या कर सकते हैं? देखो, पहली चीज ये है कि आपको देखना है कि हम जब बात कर रहे हैं इस वक्त हम स्टैंडर्ड चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है. स्टैंडर्ड चीज की बात मतलब कि हमें पता है कि हम किसी भी सिस्टम को जिसको इनपुट कोई भी रैंडम सिग्नल मिल सकती है, ठीक है, कोई भी आर्बिट्री सिग्नल जिसको हम डिफाइन भी नहीं कर पाएंगे मैथमेटिकली, वो भी कोई सिग्नल मिल सकती है. तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि वो तो किसी भी कंट्रोल सिस्टम को कुछ भी मिल सकता है इनपुट, लेकिन हमें उस कंट्रोल सिस्टम को देखना है, क्या उस सिस्टम को देखना है कि वो सिस्टम स्टेबल है कि नहीं. उसके लिए हमें जरूरी है कि हम पहले उसको टेस्ट सिग्नल से हम टेस्ट करें. समझ रहे हैं आप? जी जी सर. जी सर. इसमें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट we cannot let's say design, or we cannot just design this for a random signal, or we cannot can say determine the features of this control system with a random signal. So this control system may be subjected to a random signal, ठीक है. Yes, sir. But what we are actually looking at in this case, in the steady state error case, actually, that we will determine the steady state error of that control system or that complete system actually with respect to these, let's say, 3 types of input which are typically encountered. Test signals, yes sir. Though we may have any random signal also, but ये हमारा standard format है. इससे हमें जैसे कोई भी सिस्टम है उसको अगर हम कोई भी रैंडम सिग्नल मिलेगी, उसका स्टेडी स्टेट इनपुट क्या होगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन पहले हम उस चीज का देखेंगे. आपको भी याद भी रखना चाहिए इसमें, पहले हम उस चीज का देखेंगे कि ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स का कैसा है, उसको स्टेबल है कि नहीं. पहली बात है कि वो स्टेबल है कि नहीं. तो अगर हम कोई भी सिग्नल देंगे, हो सकता है वो सिग्नल मतलब वो इनपुट ही उस पूरे कंट्रोल सिस्टम को अनस्टेबल कर रहा हो, ठीक है. जी सर. तो which is very important to see, because if the system is not stable, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, finding state error actually doesn't mean anything, isn't it? जी. So first thing is that it has to be stable.
Then if it is a stable system, then obviously it will land up with some kind of, isn't it, let's say output, which is something which can be determined. So जैसे हमारे पास स्टेप इनपुट ही है तो हमें पता चलेगा स्टेप इनपुट में वो वापस उस स्टेप पे पहुंच रहा है कि नहीं, और आखिर में वो लेट्स से आफ्टर सम टाइम वो कितना एरर रह रहा है, कांस्टेंट एरर बिटवीन द आउटपुट एंड द डिजायर्ड इनपुट, तो उसको हम कहेंगे स्टेडी स्टेट एरर। इसी तरह कोई सिस्टम होगा लेकिन हम कहेंगे चलो जी नहीं ये रैंप वाला इनपुट से हम टेस्ट करेंगे, किसी को हम जैसे पैराबोलिक इनपुट से टेस्ट करेंगे। सो दीज आर सम स्टैंडर्ड सिग्नल्स, सो वी कैन ऑलवेज हैव एनी रैंडम सिग्नल, इवन साइनोसॉइडल सिग्नल्स एंड अदर सिग्नल्स आल्सो, ठीक है। जी सर। But to start with, let's say this is how we basically determine the basic steady state error for the standard systems, or these are some of the standard signals. ठीक है जी सर। तो इसका एक टिपिकल फॉर्म जो है वो ऐसा है कि अगर हम देखेंगे इसको स्टेप इनपुट को, तो पहला वाला आपका स्टेप इनपुट है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा आउटपुट सी टी कैसे वेरी कर रहा है, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3, और हमारा जो इनपुट है वो वहाँ पर मार्क किया मैंने, ठीक है। सो लेट्स से दिस वाज द इनपुट टू द सिस्टम and this is how it responded in case 1, case 2 and case 3, typical example of let's say a first order system, ठीक है। तो after some time, let's say when the transients had died out, so we are seeing that output 1 is almost matching with the input, the first one. So in that case there is no error between the output and the input after some time, so in that case we can say steady state error is actually 0. But there could be case where we see that the output will land up like this, and after some, even after a longer time, we will have a difference between the input and the output, so which we will actually denote as the error. Let's say मैंने E2 लिखा है यहाँ पे infinity, और किसी सिस्टम में ऐसा हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा एरर रहे, E3 infinity, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन रेज होता है कि ये एरर क्यों आएगा, जरा आप मुझे बताओ अपनी इंट्यूशन से, क्यों आएगा स्टेडी स्टेट में, प्रॉब्लम क्या हो रही है। हमें तो कंट्रोल सिस्टम क्लोज लूप बनाया ना, क्लोज लूप सिस्टम में तो वो बताएगा कि देयर इज एन एरर, अगर क्लोज लूप बता रहा है कि एरर है और उस पर हमारा एक्शन हो रहा है कंट्रोल एक्शन, तब एरर क्यों तब भी रह रहा है, जरा आप में से कोई ट्राई करो इसको। losses for losses थोड़ा आप नियर हो। जैसे जैसे सर ने उस दिन एजमत एंगल की एग्जांपल ली थी सर, उनमें वो फ्रिक्शन वगैरह होते हैं ना गियर्स में, तो उस वजह से फिर वो एरर्स। एक दो और बताओ, और बताओ में से कोई। देखिए सबसे पहली चीज आपने अगर ये मेजरमेंट्स में पढ़ा होगा, क्योंकि ये काफी ताल्लुक रखता है मेजरमेंट से, आपने कुछ डेड बैंड पढ़ा है कभी, डेड बैंड या बैकलैश? जी नो सर। बैकलैश इन गियर्स नहीं पढ़ा है थियरी मशीन में, बैकलैश इन गियर्स पढ़ा है किसी ने? नो सर। गियर्स में बेसिकली अगर आप देखेंगे जब गियर्स हम बनाते हैं ना, तो उसमें हम रखते हैं कुछ लेट्स से स्पेस फॉर इंटरफेरेंस, अंडरकटिंग करते हैं, और दो टीथ्स के बीच में थोड़ी सी जगह रहती है सर 11 अलाउंस जैसे रखते हैं। हाँ क्यों रखते हैं अलाउंस? अगर कभी हमें कुछ एरर आते हैं तो उसको कंपनसेट करने के लिए। सर वेयर एंड टेयर होता है ना, हाँ वेयर एंड टेयर होता है तो मे बी, या फिर ये हीट से एक्सपेंड होते होंगे गियर्स। देखो मैं आपको अभी एक थोड़ा सा ना एक शेयर करता हूँ, एक सेकंड शेयर करता हूँ, मैंने भी खोला है इसमें शेयर स्क्रीन, एक सेकंड वेट करो, मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूँगा स्क्रीन शेयर।
दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. For mechanical engineers, this thing, knowing this thing is very very important. I don't know, I'm sorry, मतलब पता नहीं आपका उस वक्त क्या मिस हुआ है, लेकिन बहुत ही बुनियादी चीज़ है और अहम चीज़ है गियर्स में। जब आप गियर पढ़ते हैं ना थ्योरी ऑफ मशीन्स में, अरे हम शायद क्लियरेंस रखते हैं ये ल्यूब्रिकेशन जो ये वाली जगह है ना, यहाँ पर जो मैं माउस से दिखा रहा हूँ ना, मार्क कर रहा हूँ, ये सर फॉर स्मूथ फ्लो के लिए हम अलोनेस रखते हैं सर। हाँ। तो अब इस वजह से क्या होता है, जब गियर मैश होता है ना एक साइड में, यस सर। जैसे एक टीथ ने टीथ को पुश किया, ठीक है, यस सर। तब तो मोशन ट्रांसफर होगी ना एग्जैक्टली, यस सर। ठीक है। लेकिन जब अगर रिवर्स करना हो उसको, तो जब तक ये इसको हिट ना करे तब तक कोई आउटपुट नहीं होगा फॉर ए गिवन इनपुट। यस ये समझ में आ रहा है? यस सर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट? यस सर। So for a given input, let's say very small input of the input gear, there will be no output because of this backlash, because we have kept this clearance for, let's say, various other factors. यस सर। ठीक है? So which means for a given input there is no output. यस Okay? सर। So this is kind of a non-linear behavior where you say that there is no output. Otherwise, for a given input, you have n by n1 by n2 is equal to output, isn't it? n1 by n2 of this is equal to the, n by n1 by n2, let's say, which is the gear ratio into the input angle is the output angle, isn't it? Yes, sir. So, but because of this backlash for a small momentary, let's say, part, there is no output. So which is kind of a non-linear behavior, let's say. ये होता है बैकलैश। इसी तरह होता है डेड बैंड। डेड बैंड एक और फिनोमिनन है। फॉर एग्जांपल से हम बात करेंगे इनर्शिया की। किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश करेंगे तो उसको पुश करने के मतलब देयर इज सम टाइम दैट इट विल टेक टू एक्चुअली मूव। यस सर। cause motion actually, which is because of the friction, because of the inertia, let's say, isn't it? After that, threshold is achieved, you will be able to push that, move that, isn't it? So which means again for a given input there is no output. After some time only there will be an output. जैसे हमारे एक्चुएटर्स में, जैसे मोटर्स वगैरह में होता है ये प्रॉब्लम, हम जो उनको बेसिकली मोटर्स को बेसिकली चलाते हैं, लेट्स से कोई मोटर है हमारे पास जो 12 वोल्ट पे चलता है, तो अगर उस मोटर को हम चलाना चाहेंगे लेट्स से 5 वोल्ट्स पे, हो सकता है वो चलेगा ही नहीं। इसको आप समझ रहे हैं इस बात को? ये बात समझ में आ रही है? यस सर। Suppose if we have a motor, an electric motor, let's say, and if it is like to be operated at 12 volts, इसका मतलब है अगर मैं उसमें 5 वोल्ट या 3 वोल्ट डालूंगा, the applied voltage between the ends, आपको क्या लगता है मोटर चलेगा? नो सर। No, sir. मोटर नहीं चलेगा generally, because there is some friction associated with the with the obviously the motor itself. There is some let's say inertia associated, so it will take some minimum energy actually, which we call as even threshold, to actually make it move. So maybe at 7 or 8 volts it may move to some extent, but at 9 volts it may move faster, at 12 volts it may move at the desired speed. ठीक है? So that range of let's say 3 volts or 5 volts is actually known as the dead band, where motor doesn't respond. इसी तरह क्या होता है स्टेडी स्टेट एरर में, क्या होता है, क्यों आता है, बेसिकली जब आपने इनपुट दिया, सपोज आप कह रहे हैं उसको इस जगह पे जाओ मोटर को, लेकिन ये एरर जो रह रहा है इसमें, ये वाला, ये इसीलिए रह रहा है क्योंकि इसमें जो वैल्यू आ रही है फाइनली, ये कह रहा है इसको कि देयर इज एन एरर बिटवीन द टू, बट दैट एरर जो है, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जितनी वोल्टेज है, इट्स नॉट एनफ एक्चुअली टू मूव इट फर्दर टू दिस वैल्यू। समझ रहे हैं आप? फिजिकल अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हैं इसकी? यस सर। आपके पास एरर जो आ रहा है, एरर का मतलब है सपोज कुछ लेट्स से कोई वोल्टेज हो सकती है, या कोई मोशन हो सकती है, कुछ और हो सकता है, आउटपुट कैन बी एनीथिंग, इजंट इट? सो दैट इज नॉट एनफ एक्चुअली टू पुश इट टू द फाइनल वैल्यू बिकॉज ऑफ द नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स, लेट्स से लाइक फ्रिक्शन, like backlash, like dead band in these systems. This is inherent to any electromechanical system. This happens, so that's why you will have errors. But that's why in control systems this is important to see whether there is an error or not, because if we are supposed to hit a target or something like that, we cannot just let some error be there, isn't it? We have to be very specific. Even in the system that we design, let's say the airbag system that we have in the accidental cars mein, ya medical systems mein, or as systems mein. So we have to be careful that this error decreases, and this can be decreased by actually making some changes in the control system.
like changing the gain, changing other things. Okay, because of which this output can be actually converted to this output and finally to this output. But obviously we will see later that all these things happen at the expense of some other things also. इसका मतलब जैसे हमने देखा था ट्रांजिट रेस्पॉन्स में कि अगर हम ओवरशूट को बढ़ाना चाहेंगे या कम करना चाहेंगे, हो सकता है हमारा जो राइज टाइम है वो डिले हो रहा था. समझ रहे हैं आप? So every parameter has an impact on the other parameter also. So it's like more of optimization trade-off कि हमें error पे हम are we really good with this kind of error and let's say some other good performance, or we really want the error to be zero. Let's say in medical surgery, अगर हमें medical robotics में देखते हैं उसमें एक application है neurosurgery in which we cannot even have an error of some even some I would say millimeters or maybe less than that. So there the error is highly significant. Cannot let the error to be anything, or even target something like any defense application or any other applications. So in that case, this takes priority, and maybe some other things don't take priority. Clear? Yes, sir. Similarly, in the case of ramp input, we may show it this way. Sir, This is very easy to understand. Huh? so in case of voltage, so were you talking about amplifier drift? The amplifier drift is something else. This is a very So that more of input offset voltage drift. The input offset voltage drift होता है ना? हाँ वो अलग चीज है, वो इनपुट में हो सकता है. सर वो इसी में आता है स्टेडी स्टेट एरर में? नहीं इसमें नहीं है, वो पार्ट इसका नहीं है. दैट इज समथिंग इज एन इनपुट सिग्नल. हम यहाँ पर बहुत ही सिंपल बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक सिस्टम है या कोई भी मैकेनिकल सिस्टम है, देयर इज अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इट टू ऑपरेट एक्चुअली. और वो मिनिमम एनर्जी क्यों होती है? बिकॉज उसके अंदर कुछ अपनी इनहेरेंट फ्रिक्शन होती है, इनर्शिया होता है, उसको ओवरकम करना होता है. ठीक है, तो उसके लिए मिनिमम वोल्टेज चाहिए उस चीज को मूव करने के लिए. कुछ जैसे 4 वोल्ट के बाद मोटर चलेगा तो 4 वोल्ट तक चलेगा ही नहीं, वो देयर विल बी नो आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट. दैट इज काइंड ऑफ अ डेड बैंड फॉर इट. सो दैट्स व्हाट अगेन, इफ अगर एरर आपका ऐसा आ रहा है, मोटर की पोजीशन को आपको ऐसा पोजीशन करना है, अगर एरर ऐसा आ रहा है कि आपका मोटर वहां तो पहुंच रहा है लेकिन बहुत ही नजदीक है, क्योंकि अब जो एरर दिखा रहा है वो इतना कम है कि वो 4 वोल्ट से कम है, 3 वोल्ट से 2 वोल्ट से, तो वो तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा ना मोटर. इसीलिए कॉन्स्टेंट एरर है. दूसरा इस तरह इसका विजुअलाइजेशन है रैंप का. वी हैव रैंप इनपुट व्हिच इज so this is the ramp input, and we have an output 1 where the system responds like this initially with some transients and then dies out, the transients die out and then they correspond with the input exactly. So this is input 1, output 1 where there is no error. There is output 2 of a second system, a system with different features, that it actually has an error transients but they don't die out so early, but finally as they die out they still lead to have some error between the desired input and the output. So this is kind of a second system where this could be a problem. And there is another type where there could be an output which can totally go at a different trajectory and it will have an infinite error at the steady state. Okay? And in this case steady state is measured vertically because we are measuring the difference between the output, let's say on this scale. Okay, so we're measuring vertically. This is the time axis. We don't measure this way. Okay, so this I have already discussed that is applicable to stable systems only, because if their system is unstable, you don't really mean anything in determining the steady state errors, because first the system has to be stable, then only we are interested in knowing the steady state errors. So this also I have discussed that the sources are the nonlinear sources like backlash, dead band, and maybe other things, but it is also the type of input and the configuration of the system itself that can actually lead to steady state errors. So we'll see that for different types of inputs also, and maybe for different parameters of the system that we can change like gain and other things, that we can actually reduce the steady state errors also. Okay.